now. Recording taking place. All right. Okay, guys. So we begin with. Awesome, sir. वालेकुम अस्सलाम मूसा, क्या हाल है तुम्हारे? लॉन्ग टाइम. हाँ, मैं ठीक हूँ. Yeah, has been a long time. yes, it has been a long time. You've been missing. So मूसा, वो जो हमारा कुछ रह गया है ना, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? मतलब बीच में there is like binomial तुम्हारे साथ जो भी रहता है. That's fine. Honestly, I think there's more emphasis on mechanics right now. बिल्कुल ठीक है. Let's put that emphasis there. Okay, guys, kinematics हमारे पास दो किस्म का है. Kinematics is the study of motion in general. हर एक को स्क्रीन नजर आ रही है? We're good to go. Hello, Ira. How are you? Kashaf, please make sure कि Good, sir. हर चीज कॉपी करो. ठीक हो गया, बेहतरीन. Alright, guys, तो हमारे पास equations of kinematics दो किस्म की है. एक है constant acceleration वाली और एक है variable acceleration वाली. आज जो हम कर रहे हैं वो है constant acceleration. इस constant acceleration में भी there are two basic scenarios जो कवर किए जाते हैं. एक है free fall scenario, एक है motion in a straight line scenario. ठीक है? थोड़ा सा because I am quick, so मेरी writing बस almost legible होगी. तो इन दोनों सिनेरियोज में कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंसिडर की जाती है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी कंसिडर एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जिन लोगों को बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दें. कोई ऐसा बंदा जिसने फिजिक्स भी ना ली हो और मैकेनिक्स किया भी ना हो. ये मुझे सवाल जाता है मूसा को और ये सवाल जाता है ईशा को. ईशा, तुमने फिजिक्स पढ़ती हो ना? और मूसा? Sir, I took physics in O levels, but like I barely remember anything. All right, done, Musa. We are now going to basic 101. तुम्हें तो एक्सेलरेशन नहीं पता याद रहा होगा कि होता क्या. अच्छा देखो मूसा, क्रिकेट देखते हो ना, या देखिए कभी जिंदगी में? एक बैट्समैन एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे रन करता है और फिर वापस घूम के आ जाता है. जब वो वापस आता है तो हम कहते हैं कि उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई. इट इज बैक टू स्क्वायर वन. तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है. लेकिन मूसा, उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो ट्वाइस द लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ द डिस्टेंस ही हैज ट्रैवल्ड. 2 times 11, 22 yards उसका जो है वो डिस्टेंस हो जाता है. इज दैट ऑल राइट? यस मूसा? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 है. सो डिस्प्लेसमेंट एज द वर्ड सजेस्ट के कितनी ओरिजिनल प्लेस से कितना दूर या कहां पे वो प्लेस कर दिया गया. दैट्स व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज. अंडरस्टूड? तो अगर एक स्ट्रेट लाइन, हम वैसे एक जनरल सिनेरियो, क्योंकि ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मूसा, कि अगर आप यहां से चले इस ओ पॉइंट से, 0 पॉइंट से आप चले, आप 2 सेकंड बाद 10 मीटर्स तक पहुंच गए, तो आपकी मूसा डिस्प्लेसमेंट होगी 10 मीटर. फिर थोड़ा सा और आगे गए, लेट्स से 20 मीटर पे गए. कितने सेकंड बाद? जी टोटल 5 सेकंड गुजर चुके हैं और आप 20 मीटर पे पहुंच गए हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट मूसा हो गई है 20 मीटर. फिर और ये स्ट्रेट लाइन मोशन है. फिर ऑब्जेक्ट वापस मुड़ा है. वापस मुड़ के जब ओ पे आया है, लेट्स से टाइम 10 सेकेंड्स बाद, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना मूसा, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है. और जब टाइम, और फिर वापस कंटिन्यू किया, बिहाइंड हिज ओरिजिनल पोजीशन चला गया, तो उस केस में हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो गया. फॉर एग्जांपल ये आ गया -10 मीटर पे, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो -10 मीटर हो गई है. मूसा, डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो जाती है जब when you move behind the original position? That is where the displacement becomes negative. All right. Hello Ramesh, क्या हाल है? Mo dude, guys, everybody needs to come with their own original names, please. Mo dude, whosoever is Mo dude, I need you to put your own name, original name.
Who is mood dude? Please rename yourself. Please be quick. All right. Otherwise, I'm putting you in the waiting room. Thank you, Musab. All right. So we've got यहाँ पे Musa, you got this basic idea कि डिस्प्ले नेगेटिव भी होती है. अच्छा, डन. फिर क्योंकि तुमने कहा कि मुझे ओ लेवल्स में मैंने की थी बातें और चीजें भूल गई हैं, तो यू नीड टू वेरी क्विकली गेट सम बेसिक थिंग्स सॉर्टेड. सबसे पहली चीज के हम ओ लेवल्स में सीख के आए हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने कुछ इस तरीके की शेप्स को टैकल किया है. I need you to understand what's going on in all of these straight line segments. Okay, you need to be very good at telling me what is happening in all these different places. Let's say ये time axis है, ये 1 लिख देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, simplicity के लिए इसको 4 बोल देते हैं. We don't care much, बस इतना सही काफी है. मूसा, इस पहले 1 सेकेंड में ये 10 मीटर्स दूर गया है ऑब्जेक्ट. इट हैज मूव 10 मीटर्स आगे. फिर उसके बाद यू गेट दिस? यस मूसा? यस सर. ओके. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपके पास जो ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, ग्रेडियंट आपको पता है राइज ओवर रन होता है, तो हम कहते हैं ग्रेडियंट में राइज हो गया डिस्टेंस और रन में हो गया टाइम. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है वो हमें पता है स्पीड होती है. ठीक होगी बात? द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड. ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये एसेंशियल है. इधर जब एक ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो उसकी स्पीड 0 है. वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. जब भी कहीं कहीं आपको बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 है. इस केस में मूसा, कैन यू सी दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइंस हैव कांस्टेंट ग्रेडियंट एंड द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स स्पीड. तो इसको हम बोलते हैं ये कांस्टेंट स्पीड है. अच्छा, अब मैं इधर ही इंट्रोड्यूस करूंगा कॉन्सेप्ट वेरी क्विकली वेलोसिटी का, क्योंकि एक में ग्रेडियंट पॉजिटिव है, दूसरे में ग्रेडियंट नेगेटिव है, लेकिन दोनों की सिग्निफिकेंस है. वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि इज द सेम थिंग एज स्पीड. ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज का फर्क है. वेलोसिटी वर्सेस स्पीड में सिर्फ एक चीज का फर्क है. वो ये है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती. नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे जा रहा है और आपने बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब है कि एक फिक्स्ड बात है, बाय कन्वेंशन आपने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव कंसीडर किया स्पीड को, तो अगर यही ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न कर रहा है विद सेम स्पीड, लेकिन आप उसको वेलोसिटी -5 दोगे, तो राइट हैंड साइड पे मूव करते हुए +5 है, वापस आते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हुए -5 है. सो अगर आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव होती है, वेलोसिटी इज द सेम एज स्पीड, लेकिन वेलोसिटी हैज अ नैक एंड अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग नेगेटिव. द नेगेटिव इंडिकेट्स अ चेंज इन डायरेक्शन. Musa, can you remember this? That the negative of a velocity represents a change in direction. Yes, Musa? Come on, where is Musa? Is he here? Yes, sir. ठीक है. So ये तुम्हारे पास एक स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, और ये जो उल्टा है दूसरी तरफ है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट स्पीड बट इट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन. ठीक है, ये जो नीचे आया है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड बिहाइंड द ओरिजिनल पोजीशन, द स्टार्टिंग पॉइंट. इसका यह मतलब है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई है, इसका मतलब है कि वो पीछे चला गया.
इस जगह का मतलब क्या है, ये जहां पे ये कट कर रहा है आपके एक्स एक्सिस को, इसका मतलब है कि यहां पे ये रिटर्न कर चुका था ओरिजिनल पोजीशन पे, इट हैज रिटर्न जर्नी इधर शुरू हो गई थी जहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा था। ठीक है, यू गॉट दिस होल पैरामीटर सॉर्टेड। मैं मूव ऑन करूं बिकॉज आई हैव टू कवर अ लॉट ऑफ स्टफ। ओके सर एक दफा फिर समझा दें, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, इंटरनेट का इशू आया हुआ है। Mubashir, I have recorded this. I will upload and send you the YouTube link. मुझे next example पे move on करने दो. You see that. ये वाली example तो बाद में कर लेना. You will be able to cover it very easily. ठीक है मुबशिर, ओके यहाँ सर। से इस point onwards आप देखो. ओके All right. So thank you मुबशिर. Okay. So हमारे पास displacement time graph इस shape का भी हो सकता है. अब ये शेप्स मैटर करती हैं कि इंसान को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये शेप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जो शेप जो एग्जिस्ट कर रही है, इसमें जो ग्रेडियंट है, टैंजेंट जो बन रहा है वो ग्रेडियंट्स दे रहा है। तो जो टैंजेंट्स हैं वो ग्रेडियंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है बिकॉज इट्स बिकमिंग स्टीपर एंड स्टीपर, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। मूसा, ठीक है, जिस तरह गाड़ी एक्सेलरेट करती है, इट चेंजेस इट्स स्पीड। ये तुम्हें याद आया कुछ पुरानी बातें, बेसिक बातें, कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। The idea of acceleration is that it is the rate of change of velocity. This is what acceleration is. It is the rate of change of velocity. That's what acceleration is. I will move very quickly now to velocity time graph. इसके 2-3 और फॉर्म्स हैं, वो हम विद एग्जांपल्स देख लेंगे। जो पिछली चीज हम कर रहे थे, आई एम मूविंग, वी हैव टू मार्च ऑन। आपके पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया हो, लाइक दिस वन ओवर हियर, ये टाइम इन सेकेंड्स है और आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहां से शुरू हो रहा है, मतलब ये रेस्ट से शुरू हो रहा है। रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जब जीरो है। इन 1 सेकेंड लेट्स से आपकी वेलोसिटी, या इन 10 सेकेंड्स लेट्स से आपकी वेलोसिटी जो है वो 5 पे पहुंच गई है। सो इन 10 seconds ये एक्सेलरेट करके 5 पे पहुंचा है। द ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equal to acceleration. Can you guys note this down? Make sure everybody notes, has this down. Raya, आपको ये पता होना चाहिए. Isha, you, I'm pretty sure you know this. Yes, Musa? Gradient of velocity time Yes, sir, I know. is equal to acceleration. That is clear. ठीक है. Farid, so if velocity is constant, so acceleration is 0. Yes, yes. So this is the place where acceleration is 0. I'll denote acceleration with A, because यहाँ पे क्या है, velocity constant है, constant velocity. इसके अंदर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, डिसेलरेट कर रहा है। यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इस जगह के ऊपर आके ऑब्जेक्ट दोबारा रेस्ट पे आ गया। इस जगह के ऊपर जब ये वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, दैट रिप्रेजेंट्स चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है मूसा, वी गॉट अ लॉट ऑफ दिस डाउन एंड सॉर्टेड. Okay, just give me a second, guys. Just give me a second. I need to pick. Oh, call this guy back. ये बार-बार बना करता रहेगा. All right, just a second. हाँ जी. So, just a second. Let me just pause the recording. All right. So, guys, ये हमारे पास जो shaded area है मूसा, this is representing distance traveled.
area under the velocity time graph represents distance traveled. मैं इन दो सेपरेट एरियाज को डिफरेंट कलर्स दे देता हूं. ये दो डिफरेंट कलर्स इंडिकेट कर रहे हैं. एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेट्स से टू द राइट है और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द लेफ्ट है. द वन अबव is in another direction, the one below the time axis is in an opposite direction. Is that clear, Musa? बाकी सबको ये क्लियर है? मूसा तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए. ठीक है, मुबशिर को भी क्लियर है. ठीक हो गया. सो मूसा, यस Yes, sir. ओके, डन. सो हमारे पास मूसा इसके बाद we've got like this theory which generally these guys who take physics, they do it in their physics class and they're like pretty good at it and understand this very well. तुम बस याद रख लो, इतनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, बस सिर्फ याद रखने की जरूरत है. In a velocity time graph, I have like three different forms of the graph ABC. A represents something, B represents something, C represents something. B represents constant acceleration. A represents decreasing acceleration. And C represents increasing acceleration. Why is that so? Is based on a very basic concept कि जो gradient होता है वो acceleration को represent करता है. As the with time, the gradient of the C graph is increasing. That's why you say increasing acceleration. B graph का gradient fixed रहता है, तो that's constant acceleration. A graph का gradient जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, so that's decreasing acceleration. Done. Moving on. Raya, इसको हम move on कर दें. We're good with this? Yes. Okay, good. Musa and Ramis. Ramis, you're okay with this now? I hope so. Okay, so हमारे पास then we've got these particular equations of motion. जी मलाइका, क्या कह रही हो आप? I missed वो ऊपर वाला part please. कौन सा वाला पार्ट मलाइका? ABC. ABC. Okay, I'll just quickly go over it. A graph, B graph, C graph के different forms हैं. A ग्राफ जो है वो इस तरीके का है, टेपर ऑफ हो रहा है. ऐसा ग्राफ है जो कि आपको, अगर आप फिजिक्स पढ़ती हो तो ये टर्मिनल वेलोसिटी टाइप ग्राफ है. टर्मिनल वेलोसिटी का वो कॉन्सेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड शुरू में बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती तो जाती है, बट इट रीचेज अ लेवल जहां पे उसके बाद उसकी स्पीड उससे ज्यादा नहीं हो सकती. तो उसका जो एक्सेलरेशन का रेट है वो कम होता जा रहा है. कर वो एक्सेलरेट ही रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, लेकिन it starts to just slow down. Not really slow down, it increases speed, but it gets to a certain speed and it doesn't change that speed after that. B graph ऐसा है कि वो बस स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है तो बढ़ती जा रही है तो बढ़ती जा रही है. That's constant acceleration. C जो है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, मतलब कि स्पीड बढ़ रही है, फिर रेट ऑफ इंक्रीज चेक करो कि स्पीड एकदम से it just kicks off, it goes to an like it tends towards an unlimited value. तो increasing acceleration है C graph, constant acceleration है B graph, और decreasing acceleration है A graph. सब के सब में acceleration जरूर है. ठीक है, this is what I said. Now an example of vertical motion, a very quick example, फिर उसके बाद हम उस पे move कर जाएंगे. This is velocity time graph of an object thrown vertically above the ground. Now, why is that the case? अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने एक certain velocity के साथ, let's say 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने ऊपर फेंका है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड. ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी.
जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होगी और वो फिक्स्ड रेट से कम होगी, क्यों? क्योंकि there's acceleration due to gravity acting on this object, which is decelerating this object, stopping it. And when it reaches its max height, its velocity becomes 0. This is where the object is at rest. The area underneath velocity time graph represents distance traveled. So this area represents the max height the object has reached as it goes to the topmost position. After it has reached its resting point, it starts to move back. And as it moves back, it falls through the same distance. We're assuming there's no resistance due to air resistance, कोई नहीं है. तो उसकी जितनी स्पीड से ऊपर फेंका था उतनी स्पीड से वो वापस नीचे हिट करेगा. This is our assumption based on a perfect system which doesn't really exist. As it goes up, there is drag. Drag means there's resistance. As it comes down, there's also resistance. So it will not have the same speed as it falls down technically, but हमारे लिए mechanics के अंदर सब चलता है. So acceleration is considered as -10 for the entire motion. ये हम आगे जाके further इसके ऊपर delve करेंगे. We'll focus more on this. Now, very quickly moving towards the equations of motion. हमारे पास equations of motion जो exist करते हैं वो Suvat से हम उसका short form बनाते हैं, Suvat equations. These are equations which have constant acceleration. Musa, आपने O levels में देखा था distance over time. That's all you saw in O levels. That was speed. We are going to update all your concept now. This was constant speed or average speed के लिए you would say total distance over total time. That would be average speed. This is all that you have been exposed to. Now you are exposed to these new terminologies, S, U, V, A, T. S को मैंने थोड़ी देर पहले भी use किया था. S stands for displacement. U stands for initial velocity. Initial velocity means जो शुरू की velocity है. V stands for final velocity, जो कि end की velocity है. A stands for obviously acceleration and T is obviously time. Suvat equations में हमारे पास ये equation है, V is equal to U plus AT. That's how final velocity, initial velocity, acceleration and time are related. I can derive this, but I don't think, does anybody else want me to derive this? UT plus half AT square is the second equation. V square minus U square equals 2AS, or V square is equal to U square plus 2AS. This is the third equation of motion. कब कौन सी इस्तेमाल की जाती है? Based on what is given, what are the parameters given in the question. Usually the one that is liked by Cambridge and the kinds of questions that trigger a response is this quadratic form of the equation, S is equal to UT plus half AT square. ये बहुत ज्यादा Cambridge test करता है. Mainly ये तीन हैं. Extra equations में हमारे पास एक दो और भी हैं, VT minus half AT square. I don't want to give that yet. ये तीन equations के साथ ही काम करो. Maximum एक और ले लो तो वो है U plus V over 2 times T. This is like average velocity into time. That also gives you distance. All right, so we've got a 10-minute heads up. There's 10 minutes left. Okay. Are you ready for some questions? Yes. Okay, let's do some questions. I'm going to jump to questions which are here.
Okay, different styles and types. Let's see, which one do we do first? All right, we'll do this one first. Okay, so everybody can see this question. A train starts from rest at a station A, travels in a straight line to B. So whenever such a question is given, especially Musa, you just make a little pictorial representation, not ke puri train banao, treat it as a particle, or kaho ki ye A se ja rahi hai B tak. And then try to fill up this space with every information that they have given. वो कहता है it starts from rest, मतलब भाई इसका जो initial speed है वो 0 है और B तक जाता है and B पे जाके ये रुक जाता है, मतलब यहाँ पे भी रुक जाता है. The train moves with constant acceleration दे दी है for the first 600 seconds. मतलब तुम्हें पता है कि यार ये time 600, there's a lot of information that they are throwing at us. Acceleration is 0.025. With constant speed for the next 2600 seconds, मतलब उसके बाद 20, God knows where that is. तो next 2600 का मतलब है 600 plus the 2600. उस पे ये constant speed पे जाता है. Finally, with constant deceleration, मतलब there's a lot happening in this entire span. Find the total time taken for the train to travel from A to B. All right. Up, we need to think. Okay, what is really happening in this entire system? In this system, they are saying that there's a deceleration value given. अब जिस बंदे को पता है कि 3 मोशन हुए हैं, 3 किस्म के मूवमेंट्स हैं. पहला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ऑल्दो पार्ट 2 में वो कहते हैं कि स्केच करो. अगर आप रफ रिप्रेजेंटेशन कर लो तो आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है. आपको ये पता है कि पहले 600 सेकंड्स में इसने एक्सेलरेट किया है 0.025. इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो जिस वेलोसिटी पे ये पहुंचा है ना? Isn't that right? मूसा, एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है. मैं अगर वेलोसिटी चेंज राइज ओवर रन करूं तो मुझे ग्रेडियंट मिलेगा स्ट्रेट लाइन का. राइज जो है वो वेलोसिटी है v minus 0 over time 600 is equal to the acceleration given. एक ऑप्शन ये है that you do this. Velocity is equal to 0.025 multiplied by 600. कोई अगर ये कैलकुलेट करके रख ले मेरे लिए तो जरा आसान हो जाएगा. दूसरी ऑप्शन मूसा 15, थैंक यू. दूसरी ऑप्शन ये थी मूसा कि हम कहते कि इस स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इस जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी अननोन है, एक्सेलरेशन गिवन है 0.025 और टाइम गिवन है 600. हमें सू-वैट इक्वेशंस में इनिशियल पता है, फाइनल नहीं पता, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है. इक्वेशंस हमारे पास थी v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square और तीसरी थी v square equals u square plus 2as. थोड़ा सा far fetched ये है क्योंकि there's once you know this velocity value then you can find कि ये time कितना लगेगा for it to come to a stop given that it's decelerating on its way down at 0.0375 meter per second square. As it decelerates उसकी value जो है वो negative consider होगी. So we've got the first velocity हमारे पास आ गई 15 आ गई. ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है 15 जिससे ये मूव कर रहा है. मूसा, यू गॉट दिस अभी तक थोड़ा बहुत? यस सर. ऑलराइट, सो अब यहां से पंच लाइन यहां से बनती है कि वी वांट टू फाइंड आउट बिकॉज दिस इज व्हाट इज द टोटल टाइम.
वी वांट टू फाइंड आउट कि इसने 15 सेकंड से 0 पे कैसे पहुंचा है। अब जो इस न्यू लाइन है, ये जो नीचे जा रही है मूसा, इसके लिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 15 हो गई, इसके लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई, एक्सेलरेशन इसके लिए -0.0375 हो गई, और आप अब v इज इक्वल टू u प्लस AT भी लगा सकते हो, अगर राइज ओवर रन नहीं लगाना, वैसे राइज ओवर रन भी लगा सकते थे। v तुमने मूसा रख दिया 0, u तुमने रख दिया 15, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है क्योंकि वो डिसेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट करेगा तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। उप्स, where did it go? So decelerate करेगा तो इसका gradient, oh my god, where have I sent it now? Here it is. Yeah. We got this, Musa? इसके साथ मैंने लिख दिया t। तुमने इसको उधर जाके डिवाइड किया, 15 को 0.0375 से डिवाइड किया, इससे टाइम वैल्यू आ गई। टाइम की वैल्यू क्या बनी? Who's run it? 400 So 400 सेकेंड ये बनी, मतलब ये स्पैन 400 का है, बीच में जो स्पैन था ये 2600 का था। तो टोटल टाइम जो उसने पूछा है, टोटल टाइम comes out as 600 plus 2600 plus 400. So that's 3600 seconds for this object to come to rest. Musa, you got this? There are 3 motions. One when it accelerates, the other when it moves with constant speed, the final one when it decelerates. First acceleration से हमने उसकी velocity निकाल ली, उसकी वो जो final velocity है for the third type of motion वो initial बन जाती है, और उस initial velocity 15 और फाइनल वेलोसिटी 0 जब वो रेस्ट पे आता है, उस सारे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है -0.375। v इज इक्वल टू u प्लस AT यूज करके हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है टाइम की, वो 400 आई है। मूसा थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल है, बाकी आई थिंक सबके लिए इतना मुश्किल नहीं है। एनीबडी एल्स? इतना तो याद ही है वैसे। और बेहतरीन है अगर तुमने पिक कर लिया है तो, क्योंकि यू आर द ओनली वन आई एम कंसर्न्ड अबाउट राइट नाउ। आई थिंक एवरीबडी इज गुड विद दिस, everybody else is okay, right? So we then in part 2 they say sketch the velocity time graph, you've done it, and find the distance traveled A to B. Distance traveled, we should all be aware that it is the area underneath the velocity time graph. So that's a trapezium, and those of you who've forgotten what a trapezium's formula is, it's half into sum of parallel sides into height. So one side is the 3600 seconds, ye wala hai 3600, plus this one at the top, which is 2600, times the height of a trapezium is the gap between the parallel sides, which is this length, which is 15. तो आप इस सारे को मल्टीप्लाई करते हो और आप निकालते हो तो आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाता है AB। पार्ट 3 में कहता है द स्पीड ऑफ द ट्रेन t seconds after leaving A is 7.5. State the possible values of t. Not just one value but 2 values. They say speed is 7.5. आपने ये निकाल